Number 2, making a credible threat to commit hijacking. And number 3, organizing or directing others to commit this act. Sir, I have objection in the case of punishment clause, sir. In the punishment clause, there are 3 major matters are there. One is death penalty, number 2 is life imprisonment, and number 3 is confiscation of all properties. But here, sir, I have the objection in death penalty as because many of the stalwarts of our country, as well as from the other parts of the world, they told that the death penalty puts innocent lives at risk. We saw that, sir, we the people of India cannot take the risk. Why shall we take the risk to catch the life of others? Number 2, sir, in the death penalty case we have seen that race and place determine who lives and who dies. There are so many cases in our country, in and elsewhere of the world, sir. It is determined on the caste, creed, race, religion, and other things, sir. So that this death penalty should not be here in the act, sir. Number 3, sir, for the death penalty, we have to pay millions of rupees. But instead of death penalty, if we accommodate the victim, the process of the case takes so many years, sir. So in this process, the family members of the victims, they faced very much trouble, sir. So instead of death penalty, if we spend the money for the purpose of the safety and security of the family members of the victim, I think, sir, it would be better. Sir, poor quality of defense we have seen. Poor quality of defense could provide death sentence to one and could provide death sentence, not death sentence to one person. In so many cases, we have so many examples that one advanced country, I have one example, sir. In United States of America, 68 persons case where death penalty has been proclaimed. Again, that matter has been reversed in the 68% cases, sir, in the case of strong defense. So, my request, sir, that should not be there inside the bill. Sir, capital punishment does not deter the crime. Sir, now I quote a matter, I think all will appreciate it, that the father of our nation, Mahatma Gandhi said, sir, an eye for an eye makes the whole world blind. Sir, by giving death penalty, could we make it possible to stop the crime? Sir, I am concluding, sir. Sir, in this process, the father of our constitution, what Dr. Baba Saheb Ambedkar said in the case of death penalty, I am quoting, sir, the architect of the constitution, Baba Saheb Ambedkar, said, they certainly adhere to the principle of non-violence as a moral mandate, which they ought to observe as far as they possibly can. Again, Dr. Ambedkar said, the proper thing for this country to do is to abolish the death sentence. So, it is my request, and I urge upon the minister
that death penalty should not be there, and other things, stringent action should be there for the people who will involve in the case of hijacking. With this words I conclude, sir. Sir, I thank you for allowing me to speak on the piece of legislation. Aircraft hijacking is also known as hijacking, and sky controlling is an unlawful seizure of an aircraft by an individual or a group of individuals. We know that in majority of cases, pilot is forced to fly as directed by hijackers. But there are very few occasions like the Twin Tower attack where hijackers themselves fly aircraft. The motive behind skyjacking differs. Sometimes hijackers demand for release of terrorists like IC-814 incident, to highlighting grievances of a particular community like NIF 8969, to using aircraft as a weapon, missile, to target particular location, as we have seen in 9/11. So it is very important to look at the motive behind hijacking. Looking at the increasing gravity of situation, the international community, we had first Tokyo Convention in 1963, then we had Kyoto Convention in 1970, then we had Montreal Convention in 1982, and the latest convention, Beijing Protocol in 2010. The objective of all these conventions is to take care of hijacking. Now the bill is on the lines of Beijing Protocol, and we welcome this. The bill is laying more emphasis on punishing culprits and not on prevention of the crime. There is no doubt that we have the Aviation Security Force Quick Response Team Committee of Secretaries on Aircraft Hijacking, Central Committee, Aerodrome Committee, etc. But none of the above was able to stop IC-841. So I strongly feel that instead of dealing with hijackers and hijack, the government has to lay emphasis on preventing hijacking, sir. Sir, the next point, Honorable Minister may be aware that in August 2005, we had unveiled our anti-hijacking policy. It came into force after the Cabinet Committee on Security approved it. This policy may be one of the basis for bringing this new bill by repealing 1982 Act. Because one of the objectives of the policy is to give death sentence if a person or group of persons found guilty of hijacking. But there is another initiative in the policy which says that the plane will be shot down if it is deemed to become a missile heading for strategic targets. It is not that it is there only in India. The US fighter pilots have been trained to shoot down hijacked commercial aircraft. Poland has this provision, and even Russia has this. So I would like to know from the Honorable Minister, when he has come more before the new bill, what prevented him from including a provision in the bill to shot down aircraft it becomes missile heading to strategic targets or civilian targets or other important destinations. Sir, last one, sir. Finally, sir, the compensation to victims cannot be ignored. Rather, it has to be given priority. This bill is silent on that. Secondly, you can't distinguish compensation on the basis of victims, sir. You cannot have one kind of compensation if he is a security person and another kind of compensation if he is a passenger. There is no doubt that insurance will be there for passengers, but there is no informal circumstances, but in the extraordinary circumstances like hijacking and then killing, what kind of compensation is going to be given to passengers is silent. So I want the Honorable Minister to reply to this point also, sir. With these observations, we support the bill, sir. Thanking you. Thank you. Shri Gopal Sethi. सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। द एंटी हाईजैकिंग बिल 2016 के समर्थन में मैं खड़ा हूं। ऑलरेडी ये बिल राज्यसभा में पास हुआ और लोकसभा में भी लगभग सभी पार्टी के लोगों ने इसे समर्थन दिया है, क्योंकि ये देश हित में है, ये बिल, ये मानव हित में ये बिल है, इसलिए सभी लोगों का सपोर्ट मिला, इसलिए मैं सभी का स्वागत भी करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, वैसे ये भारत देश ने जो प्रोटोकॉल सप्लीमेंट्री कन्वेंशन बीजिंग कन्वेंशन में 2010 में साइन किया था, उसके मुताबिक ये बिल में अमेंडमेंट होकर आ रहा है। जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की व्यवस्था है। मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था मंत्री महोदय जी ने किया है, इसलिए मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। लेकिन साथ साथ में वर्तमान और भविष्य में जो आतंकवादी गतिविधियाँ, जो चुनौतियाँ देश के सामने और पूरे दुनिया के सामने है, और ऐसे समय पर यह बिल में इस प्रकार का परिवर्तन करना ये बहुत ही अनिवार्य था। अध्यक्ष जी, आतंकवादी गतिविधि तो अमेरिका जैसे देश भी इससे बच नहीं पाया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की घटना हम सबके सामने है, कितना बड़ा भयानक घटना इस दुनिया ने देखा है। लेकिन उसके बाद में जो बदलाव सभी दुनिया के लोग मिलकर इस क्षेत्र में
कर रहे हैं, इसका भी स्वागत हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। और आने वाले दिनों में आतंकवादी जिस प्रकार की गतिविधियां करते हैं उससे भी हमने आगे जाकर सोचने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। अध्यक्ष जी, सौगंधरा जी ने बहुत एक अच्छी बात बताई कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले दिनों में प्लेन हाईजैक करने की भी व्यवस्था हो सकती है। इस बात को हमने ध्यान में लेकर क्यों ना हम जो फ्लाइंग पैसेंजर्स है उनको भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हुए ये जितने भी फ्लाइंग पैसेंजर्स होते हैं उनका अगर हम डाटा पहले से अगर तय करके रखते हैं तो इनके पूरे परिवारजनों का, इनके एक्टिविटी लेवल का सारी जानकारी हम उसको इकट्ठा करके इससे भी हम बहुत कुछ इसमें हम लाभ पा सकते हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। मैं जानना चाहूँगा मंत्री महोदय से, जितने भी ये हाईजैक हुए हैं उसमें फ्लाइंग पैसेंजर्स के जो होते हैं उनके माध्यम से कितना हुआ है उसका थोड़ा मैं उत्तर जानना चाहूँगा। थ्रू अदर्स अन्य माध्यमों से कितने लोगों ने हाईजैक किया है, और ये वीआईपी पैसेज जो होता है ये वीआईपी पैसेज के माध्यम से कितना हुआ है, तो इसके माध्यम से हम आने वाले दिनों में जो भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज है वो इसके ऊपर आगे ध्यान दे पाएंगे, ये भी मुझे लगता है। अध्यक्ष जी, कंपेंसेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है। मेरे समझ में नहीं आता है कि जब एक वर्ल्ड कन्वेंशन में डिस्कस होता है तो वर्ल्ड कन्वेंशन में डिस्कस होने के बाद में ये तो हो ही नहीं सकता कि विदेश के लोगों को कंपेंसेशन मिले और भारत देश के लोगों को मिले न मिले, और या तो अन्य किसी छोटे देश के लोगों को न मिले। ये तो संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब इतने बड़े फोरम पर डिस्कशन करके कोई नियम बनता है, कायदा बनता है, तो कंपेंसेशन तो सबको एक जैसा ही मिलना चाहिए। इसकी व्यवस्था ऑलरेडी होगी, अगर नहीं हो तो आने वाले दिनों में उसकी किस तरह से हम व्यवस्था करेंगे इसके बारे में भी मंत्री महोदय जी बताएंगे, तो पूरे देश के लोगों को मार्गदर्शन होगा। एक अच्छे बिल पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू। श्री अरुण कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, यान हरण विधेयक 216 पर बोलने की आपने अनुमति दी, मैं इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। समय का अभाव है, मैं 2-3 सवाल सिर्फ ध्यान में लाना चाहूँगा। एक तो इसके इतिहास और भूगोल पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। आज के वैश्विक वातावरण में निश्चित तौर से आतंकवादी गतिविधि बढ़ गई है, और यह एक ऐसा माध्यम है ट्रांसपोर्ट का जो फास्ट तो है, लेकिन इसमें जो यात्रा करने वाले यात्री हैं वे बिल्कुल अपंग हो जाते हैं। यदि कोई आकस्मिक बातें होती हैं तो उनके ओर से कोई प्रोटेक्शन नहीं हो सकता है, जबकि रेल और अन्य यात्रा में यह संभव है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी ओरिजिन के हिसाब से कंपनसेशन तय नहीं होना चाहिए, कई सदस्यों ने भी इस बात को रखा है। और दूसरी बात कि माननीय तथागत जी ने जो कहा कि CISF एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन विशेष इमरजेंसी के कालखंड में NSA के तौर पर कोई ऐसी जमात खड़ी की जानी चाहिए और इसको इतना ट्रेंड करना चाहिए कि हम इसका मुकाबला कर सकें। और तीसरी बात, चाहे जहाज में सफ़र करने वाले कितने VIP हों, राष्ट्र के कीमत पर समझौता नहीं होना चाहिए। हम वैल्यूएबल लाइफ भी खोएं तो देश का स्वाभिमान उसमें सॉवरेंटी जुड़ा होता है। इसलिए आगे के घटनाक्रम में कभी भी टेररिस्टों के सामने आत्मसमर्पण न करें, इसका भी प्रावधान होना चाहिए। इसी के साथ हम इस बिल का समर्थन करते हैं। थैंक यू। दुष्मंत चौटाला। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एंटी हाईजैकिंग बिल 2016 पे बोलने का मौका दिया और आज सरकार के समर्थन में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। जहाँ हम एंटी हाईजैकिंग बिल की बात करते हैं, आज ये एक अमेंडमेंट है एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 की, और जैसे हमारे देश ने बहुत अच्छी तरह जाना, सीखा और उसके बाद आज इम्प्लीमेंट किया, मगर आज हमें 17 साल लग गए कंधार के बाद इस बिल को यहाँ लाने में। मुझे लगता है कि हमारी सरकार अगर इसको जल्द ले आती तो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर और
जिन देशों में आज ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, बीजिंग कन्वेंशन वाले, वो लोग भी हमें देखकर कुछ सीखने का काम करते। आज जहां मेरे से पूर्व सभी सांसदों ने एक चीज कही, आज हमारे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी CISF को दी हुई है। बहुत अच्छी बात है कि हमारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्सेस जो है उनके हाथों में एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, मगर एक लकूना उसके अंदर यह है कि CISF का जवान किसी फैक्ट्री पर भी ड्यूटी करता है, वही एयरपोर्ट पर ड्यूटी करता है, और कहीं दंगे हो जाए तो वहां